अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे इस डिवाइस का नाम है Realme GT Neo 5240W। ये जो डिवाइस है ये Realme की डिवाइस है और जो इसका स्क्रीन साइज़ है बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ है, बहुत बड़ा मतलब 6.74 इसका स्क्रीन साइज़ है और इसके जो पिक्सल हैं वो भी अच्छे हैं, जो बॉडी रेशियो है वो भी बेहतरीन है और जो मेन कैमरा लगा हुआ है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और ये सिर्फ एक ही रैम में आता है इसकी रैम जो है 16 GB रैम है और इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन लगा हुआ है 8 Gen 1। 16 GB रैम की वजह से इस फ़ोन में आप गेमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और उससे बड़ी बात इस फ़ोन की जो बैटरी की है, बैटरी एक बड़ी बैटरी लगी हुई है, 64 mAh की बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी की वजह से आप अगर पबजी को प्ले करते हैं इसके लिए आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा और इस फ़ोन से आप अच्छी टिकटॉक वीडियोस, पिक्चर्स, मेमोरीज बना सकते हैं। देखने के लिहाज से ये फ़ोन स्लिम और स्मार्ट और स्टाइलिश है। Realme GT Neo 5240W, released 2023, the 9th of February, 199 gram, 8.9mm thickness, Android 13, Realme UI 4.0 256GB, 512GB, 1TB storage, no card slot, and 6.74, 1240 x 2772 pixels, 50MP, 2160p, 16GB. RAM Snapdragon 8 Plus Gen 1 4600 mAh. Network technology GSM, CDMA, HSPA, eVideo, LTE, 5G LUNCH announced 2023, the 9th of February. Status available. Release 2023, the 9th of February. Body dimensions 163.9 x 75.8 x 8.9mm, 6.45 x 298 x 035 in. Weight 199 grams, 7.0 2 ounces. SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, illuminated Arab beige. On the back, display type AMOLED, 1B colors, 144 Hz, HDR10 plus, 1400 nits, peak, size 6.74 inches, 109.2 square centimeter, approximately 87.9% screen to body ratio, resolution 1240 times 2772 pixels, 29 ratio, approximately 451 ppi. Density, platform OS Android 13, Realme UI 4.0 chipset, Qualcomm SM8475, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4nm, CPU Octa-Core, 1x 3.19 GHz, Cortex-X2 and 3x 2.75 GHz, Cortex-A710 and 4x 1.80 GHz, Cortex-A510, GPU Adreno 730, memory card slot, no internal, 256 GB, 16 GB RAM, 512 GB, 16 GB RAM, 1 TB, 16 GB RAM, UFS 3.1 main camera, triple 50MP, f1.9, 24mm wide, 1.56, 1.0 m PDAF, OIS 8MP, f2.2, 16mm, 112 ultra-wide, 14.0, 1.12 m2 MP, f3.3, 20mm, microscope, features dual LED dual tone flash, HDR, PNORMA video 4K, 830, 60 fps, 1080p 830, 60 fps, Euro-Eyes selfie camera, single 16MP, f2.5, 25mm wide, 13.09, 1.0 m features HDR, panorama video 1080p 830 fps, Euro-Eyes sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no 24-bit, 192 kHz audio comms, WLAN, Wi-Fi 800 2.11a, B, G, N, AC, dual band Bluetooth 5.3, a 2dp, LE, apps HUD positioning, GPS, L1 plus L5, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS NFC, dual side,
Infrared port yes, radio no, USB Type C 20 F8 URES sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass, battery type LiPo 4600 mAh, non-removable charging 240 W wired, 50% in 4 minutes, 100% in 10 minutes, advertised, MISC. Colors purple, black, white. Models RMX 3708, price about 440 UR. अब हम Realme की फ़ोन की पिक्चर्स और 3D इमेज के देखते हैं।